So let's start with another topic of fastidious. Okay. So this is a rubric, and here in this rubric we get the three main remedy. One is arsenicum album, Nat and the Nat Mur. Okay. So this will be the differentiation of this drug. So it will be a comparative materia medica कि किस तरह से arsenic patient आपको समझ में आएगा in your clinic. How will you identify the arsenic patient in the clinic? And how is it different between the other drugs of Naxvomica and the Natromyr with the fastidious rubric? Okay, so in the fastidious rubric we have three remedies. One is arsenicum album, other is Naxvomica. ये दो मेन रेमेडीज हैं जो डॉक्टर केंट ने दिए हैं, एंड द थर्ड इज विच इज इंक्लूडेड दैट इज नाट्रम्यूर. So most probably that is the most common जो होता है, that is arsenicum album and the Naxvomica. So what do you mean by the fastidious? Fastidious means the person is very much concerned about the particular thing. So he was very much like concerned about the things. He's very much critical, and he is very hard to please. Okay, so this is basically the meaning, English meaning of the fastidious. Now, how will you differentiate between the arsenicum album and the Naxvomica in this rubric? ठीक है. अभी सपोज आर्सेनिक जो पेशेंट होता है ना, तो आर्सेनिकम एल्बम ही वांट्स एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर. ओके, कुछ भी चीज ऑर्डर में ही, उसके हिसाब से अगर रेड पेन को दाहिने तरफ रखना है तो उसको उसी तरफ ही रखना है. ठीक है, दे आर बेसिकली वेरी ऑब्सेसिव हो जाते हैं पर्टिकुलर चीजों के लिए. ओके, तो एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर and everything should be in very neat and clean. Okay, that is one of the good remedy for the washing mania also. Okay, obsessive compulsive disorder. So, and this is why, and this is arsenicum album, this orderliness, this cleanliness, you will notice it not only in the work area. ठीक है, अगर he or she is in working person, तो उसके जो चीजें होंगी, टेक्स्ट में जो चीजें होगी वो बहुत ऑर्डरली वे से रखी हुई होगी. ओके, सो नॉट ओनली एट द ऑफिस ऑल्सो बट इन द होम. ओके, इवन घर में भी आप देखोगे, यू दे ऑलवेज, अगर आईपीआर जो आपके, अगर आपके पास पेशेंट कोई आता है और उनके रिलेटिव आते हैं, तो उनसे पूछोगे हाउ ही इज बिहेवियर, लाइक उनके नेचर कैसा है, तो बोलेंगे तो ये ऑलवेज घर को हर समय साफ रखना, अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो वो फिर से वो साफ रखती है. ठीक है, सो एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, चीजें यहाँ का यहीं रखना है. ठीक है, अगर उनके वे में नहीं होता है देन द आर्सेनिक पेशेंट गेट इरिटेटेड. ओके, ही गेट एंग्री. सो देयर इज एन अनदर रूब्रिक, एंगर फ्रॉम ट्रिफल्स. ठीक है, अगर रेड पेन अगर दाहिने तरफ नहीं रखा है, थोड़ा हटके रखा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो these are the very small things, so the arsenic patient get irritated. Okay, because he's very, he want exact thing के उसके दिमाग में मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करके दो. ठीक है, अगर वो met नहीं होता है then he become angry, and then there is a rubric also in the arsenic, that is in the rage. तो anger and rage rubric में भी arsenic आता है. Okay, this is the arsenic patient. Now arsenic patient is basically why he is want everything should be proper, should be always in the neat and clean, because he give more value to the appearance. ठीक है, so appearance अच्छा होना चाहिए, दिखना अच्छा होना चाहिए. So that is the arsenic. Okay, that is why he too much detail में attentions वो लेते हैं. Why? Because जो result हो, उसका जो appearance हो वो सही होना चाहिए. Okay, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए. That is the arsenic. Now what about your Nux vomica? Nux vomica is also in the rubric fastidious, and he is concerned, the Nux vomica is concerned more about the efficacy, the result. Okay, the result, तो उसके लिए orderliness, ठीक है अभी नहीं है, बाद में भी करके रख सकते हैं. तो orderliness और the tidiness is not that much important. उनके लिए जो काम है वो सही हो, efficacy is more important. Okay, but Nux vomica in the work only, suppose he is in the work,
तो उनके काम में, दैट इज इन द ऑफिशियल वर्क में ही विल शो हिज एफिकेसी कि हाँ सब चीजें ऑर्डरली रखना रखना होगा, अगर इस तरह से है तो जाके इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। बट ओनली एट हिज वर्क प्लेस, नॉट एट दी होम। तो घर में वो नॉर्मल होते हैं, नॉट लाइक दैट ऑफ आर्सेनिक के, उनके आर्सेनिक के घर में भी ही वांट टू do the same thing what he is doing in the office. Okay, so that is the only difference between the Nux and the arsenic. And the Nux patient is why? Because they are very much ambitious and the achiever. ठीक है, उनको आगे बढ़ना है, ambitious है, that is why they are in the fastidious rubric, and it has they also very much particular about things, but that is only about the work. ठीक है। Now the third जो मेडिसिन आती है, दैट इज ऑल अबाउट योर नाट्राम्यूर। So Natramur is also a perfectionist at his work. Okay, but Natramur is what? He is self-critical. He is self-critical. So what he will do, if he thinks that if his work is not done in proper way, then he or she feel guilty about this. She felt that it is his or her failure. Why? Because Natamur always feel unworthy. Okay, so basically this is one of his or her compensatory mechanism. मुझे इस काम को सही करना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट वे में करना चाहिए, नहीं तो अगर मैंने नहीं किया तो दिस इज माई गिल्टी। तो उनको खुद गिल्टी होती है, तो फील गिल्टी और फेलुअर work if it is not perfect, and it is a compensatory mechanism for the Natramur. Okay, now same thing if it is the arsenic is in the rubric critical exacting. If you go to the Pathak repertory, there is a rubric in the page number 88, it is critical exacting. Okay, exacting means demand a lot of effort. Critical means he is very much critical, means he is judgmental. Arsenicum album अगर उसका काम उसके ढंग से नहीं हुआ, then he will try to blame on the others. While the Natamur patient, he blames himself कि मैंने ये काम ठीक से नहीं किया। Okay, so this is the difference between the arsenic, Nux and the Natramur patient. That's if you go in the hearing guiding picture, hearing what he say about the arsenic, that it is a gold headed patient. Okay, gold headed. He is very much fastidious and attention to the detail, and if his expectations are not met properly, then the arsenic patient goes into the anger from trifles, and this resulting into the rage. Okay, gold headed patient means always the thing should always in a proper way, tip top. Now आप कैसे समझोगे इन क्लिनिक में सपोज arsenic patient आया है, कोई भी, suppose you are sitting in your clinic now, a guy, a 5 years old child come to the clinic. By looking at him only you will see that अगर वो बहुत tidy way में आया है, एकदम बटन कपड़े एकदम neatly press, बाल भी एकदम अच्छे से बना के, ओके, एंड इफ यू स्टार्ट आस्किंग हिम और हिज पेरेंट्स से कि उसका बिहेवियर कैसा है, या पूछोगे कि क्या वो अपनी चीजों को एकदम संभाल के रखता है, एकदम ऑर्डरली वे में रखता है, पढ़ाई में जब भी उसका, तो आप उसके पेशेंट्स, उसके मदर या फादर बोलेंगे हाँ वो अपनी चीज ही बहुत संभाल के रखेगा, चीजें एकदम ऑर्डरली वे में रखेगा, वो सब चीज अपनी ही चीज, सपोज उसको प्रेस, अगर मैंने बोला कि नहीं ठीक है ये कपड़े पहन के चले जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं मुझे ये कपड़े नहीं, मुझे प्रेस किए हुए कपड़े दे दो, या तो ये प्रेस करके दो, ठीक है। सो दिस आर द थिंग, the nature of the arsenicum album, and they always blame on the others. So अगर कोई arsenic का व्यक्ति, अगर if he is suffering from any type of fever or anything, okay, then he will demand so many things from his relatives. Suppose उसको बुखार है, मेरे लिए ये पानी लेके आओ,
नहीं नहीं ये पानी थोड़ा कम गर्म है, थोड़ा सा ज्यादा गर्म करके लेको, नहीं नहीं ये टेम्परेचर ऐसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा ऐसा नहीं, मुझे अभी ठंडी फील हो रही है तो पंखा को थोड़ा बंद कर दो, नहीं नहीं इतना नहीं इतना चलाओ। सो व्हाट ही इज डूइंग, वो परेशान कर रहे हैं अपनी जो उसके साथ है। दिस इज द नेचर ऑफ द आर्सेनिक एल्बम, नॉट every time, but yeah, this is one of the nature which is not present in the Nat Mur and also in the Nux vomica. Okay, so do always think that this is the nature, और इस nature को लेके पूरा आपका prescription मत कीजिए, always go with the totality. So this is the one part of the arsenicum album, and how will you differentiate the fastidious rubric among the three remedies? Okay, arsenicum album, how is the fastidious of the arsenicum album, how is the fastidious of the nux vomica, and how is the fastidious of the natramure? Okay, only one line, arsenicum album, always things should be work in order, very much particular about the detail, not only in his workplace but also at home. Nux vomica, everything is the same, but he is not, he is important is about the result. Okay, it's about the result. That is why, because he's an achiever. Arsenicum album want the appearance should be good. That is why the thing should always in a proper देखने अच्छा होना चाहिए. That is the arsenicum album. नक्स vomica, मुझे चाहे जैसे भी हो ऑर्डरली वे में क्लीन करो या कुछ भी करो, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. ओके, रिजल्ट शुड बी गुड. ओके, दैट इज हिज एफिकेसी, ही वांट्स मोर एफिकेसी. नाट्राम्यूर, ही इज ऑल्सो परफेक्शनिस्ट, बट अगर कुछ गलती होती है, अगर वो नहीं कर पाता है, देन ही क्रिटिसाइज हिमसेल्फ ओनली एंड ही फील्स गिल्टी अगर उसका वर्क परफेक्ट ना हुआ तो. ओके, एंड दिस इज ओनली बिकॉज द नाट्राम्यूर ऑलवेज फील अनवर्दी, and this is a compensated mechanism for this natramine patients. Okay, so this is one of the feature of all the three remedies. Okay, so thank you everyone, and let me know what other things you want to know, and please subscribe and like my page, or just type in the chat box if you want, or comment box if you want anything more about the Mathemedica or repetitive anything. Okay, thank you.